Namaste, Shrahovitia. I'm JVN Dr. Sunita Bhati, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, JVWU, Women's University. I'm teaching you theory of computation. It is the paper of BTech fourth semester students. Okay, in our last session, we have discussed about Mealy machine. Now, in our today's lecture, we will understand the concept of movie machine, how it works, and more than finite states and all these things. Okay, so let's start the topic. Murray machine. Murray machine is an FSM whose output depends on only the present state. Means Murray machine, what is Murray machine? Murray machine is finite state machine whose output depend on only the present state. क्या मतलब है इसका? Murray machine जो होती है उसके अंदर जो आउटपुट होता है, जो भी आउटपुट वो देगी वो डिपेंड करेगा प्रेजेंट स्टेट क्या चल रहा है, क्या प्रेजेंट स्टेट है, क्या प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट स्टेट क्या है. ओके, सो हाउ वी विल फाइंड द output and how it depends on present state we will discuss later. A Murray machine can be described by a six tuple. You already know what are the six tuple: Q, alphabet, O, delta, X, and Q0. These are six tuples. Where what is the meaning of these six tuples? Let's see. Q is a finite set of states. Means Q क्या चीज है? एक सेट है जिसके अंदर फाइनाइट नंबर में या काउंटेबल स्टेट्स है, अवस्थाएं हैं, स्टेट्स हैं. ओके, Q is a finite set of states. Now next is alphabet. Is a finite set of symbols. बहुत सिंपल है, ये एक सेट है जिसमें सिंबल्स हैं, A B C D कुछ भी आप ले सकते हैं सिंबल्स. तो सिंबल्स का सेट है और फाइनाइट है, मतलब काउंटेबल है. ये सिंबल काउंटेबल है और इन सिंबल्स को क्या बोलते हैं? इनपुट अल्फाबेट बोलते हैं. क्लियर? तो व्हाट इज अल्फाबेट? It is finite set of symbols. Now what is O? O is a finite set of symbols called the output alphabet. अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो O है ये भी finite set of symbols है, इसमें भी symbols है, काउंटेबल सिंबल्स है जिनको हम काउंट कर सकते हैं. सिंबल्स का सेट है वो भी, लेकिन वो किस तरह के सिंबल, सिंबल का क्या आपको बताएंगे? आउटपुट अल्फाबेट बताएंगे. ये आउटपुट अल्फाबेट्स है, O के अंदर जो सिंबल्स है वो आउटपुट अल्फाबेट्स. ओके, नाउ डेल्टा. डेल्टा, you know delta. Delta is transition function, but here input transition function. Delta is input transition function where delta, what is the definition of delta? Delta colon, delta is function over q, cross product of q and alphabet, and which tends to q. Means output ये q देगा. ओके, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट. एक डेल्टा एक इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन है जो कि इन दोनों सेट्स क्यू और अल्फाबेट सेट पर अप्लाई हो रहा है और आउटपुट क्या आएगा? जो बिलोंग करेगा क्यू पर, क्यू सेट से होगा आउटपुट में. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एक्स. एक्स इज द आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन. ये आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन है और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, एक्स colon q. X is output transition function from q to o. q ये आपका इनपुट डोमेन है और ये आपका आउटपुट है. मतलब आपको जो फंक्शन अप्लाई हो रहा है x, ये इस पे हो रहा है और आपको वैल्यूज जो देगा वो इससे देगा. जो वैल्यूज आएगी आउटपुट की वो इसके अंदर होगी. नाउ q0 is the initial state.
from where any input is processed. Q0 belongs to Q. ये initial state को बता रहा है Q0. Okay. The state table of a movie machine is shown below. ये state table है movie machine की. Okay. अब हम इसको समझेंगे कि स्टेट टेबल हमें पूरा एक आइडिया दे देगी किस तरह से वर्क करती है मूवी मशीन. ओके, तो हम वन बाय वन इसका एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास जो स्टेट्स हैं, देखिए ए बी सी और डी, ये चार स्टेट है. वी हैव फोर स्टेट्स ए बी सी. नाउ our initial state is A, present state. A initial state is A. Now if input value is 0, then transition function will be performed and the state will be, next state will be B for A. For input 0, next state will be B. You can see for A state, present state is A. If value is 0, input value is 0, your next state will be B. Clear? If your present value is 1, the next state will be C. You can see in the table, if input 1, then next state is C. And what will be the output? The output will be X2. The output will be X2. Clear? Now the next is, again we can see in the table, if your present state is B, then for input 0, no change, B remains same, and for input 1, the next state will be B. You can see in the diagram, for input value 0, B is the same, no change, and for input value 1, the state will be D. Clear? Again for C, you can, again for C, for present state is C, then for input value 0, no change, and for input value 1, state is changed to B. You can see. For input, you can see in the diagram, here present state is C and input value is 0, then your state is C and input value is 1, then state is D. This is X2. The output will be X2. Actually, in this diagram, there is a mistake here. The label should be 1 and the label here, the label should be 0. This should be exchanged. Okay. Now come to the next point. If your value is B, present value is D. If value is 0, then again D. If value is 1, then again D. Your output no change. So your state is X3. Output जो है आपका X3 होगा. यहाँ जो इस डायग्राम के इस टेबल के अकॉर्डिंग एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए था, यहाँ पे 0 होना चाहिए. 0 के केस में नो चेंज हो रहा है और 1 के केस में स्टेट चेंज हो रही है. ठीक है, तो दिस इज अ स्मॉल करेक्शन in this diagram. Now, what is the difference? Mealy and movie machine. What is the difference between mealy and movie machine? Actually, output depends both upon the present state and the present input. mealy machine में हमने पढ़ा था कि जो आउटपुट आएगा वो दोनों पे डिपेंड करेगा कि प्रेजेंट इनपुट क्या हो रहा है और प्रेजेंट स्टेट क्या हो रहा है. लेकिन जो मूवी मशीन होता है इसमें केवल प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करेगा कि आउटपुट क्या होगा. ठीक है, इनपुट वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता. जनरली इट हैज अ फ्यूअर स्टेट्स देन मूवी मशीन. मूवी मशीन के अंदर जो स्टेट्स होती है, नंबर ऑफ स्टेट्स वो कम होती है और इसके अंदर मूवी मशीन के अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स मीली के कंपैरिजन में ज्यादा होती है. नेक्स्ट
the value of the output function is a function of the transition and the changes when the input logic on the present state is done. कब चेंजेस होते हैं? जब ट्रांजिशन फंक्शन, आउटपुट फंक्शन जो है इज अ फंक्शन ऑफ द ट्रांजिशन. आपका जो आउटपुट फंक्शन है वो ट्रांजिशन फंक्शन है और इनपुट लॉजिक में चेंज कब होगा? प्रेजेंट स्टेट जब होगी. प्रेजेंट स्टेट कब होगी? जब इनपुट लॉजिक में चेंज होगा. बट इसके अंदर क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द आउटपुट फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ द करंट स्टेट. जो आउटपुट फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो करंट स्टेट जो है उसका फंक्शन होता है. मतलब जो करंट स्टेट है उस पर डिपेंड करेगा आउटपुट फंक्शन जो है. एंड द चेंजेस एट द क्लॉक एज, और जो चेंजेस होंगे वो कब होंगे? क्लॉक एज पर चेंज होगा. जैसे क्लॉक साइकिल आएगा उस एज पर व्हेनेवर स्टेट चेंजेस आएगा. जब भी स्टेट चेंज होती तो क्लॉक एज पर चेंजेस होंगे. ठीक है. मिली मशीन रिएक्ट फास्टर टू इनपुट्स. ये फास्ट होती है, इनपुट्स को रिएक्ट करती है. मिली मशीन दे जनरली रिएक्ट इन सेम क्लॉक साइकिल, और ये सेम क्लॉक साइकिल में ही रिएक्ट कर देती है. फास्टर रिएक्ट फास्टर टू इनपुट. जो भी क्लॉक पल्स आई है उसी के अंदर ये रिएक्ट कर देती है. ये फास्ट होती है. In Moore machine, more logic is required. Logic to decode the outputs, resulting in more circuit delays. क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट है मूरे मशीन के अंदर, जो आउटपुट को डिकोड करने में ज़्यादा समय लगता है. ठीक है. और ज़्यादा लॉजिक होते हैं इसलिए डिले करती है. सो ये नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में रिएक्ट करती है. सेम क्लॉक साइकिल में रिएक्ट नहीं करती. तो टाइम. This is all about our today's session of theory of computation. In our today's session, we have discussed about how Moore machine works and what types of output it will perform, it will give on present state. It depends on what will be the output, totally depends on present state. And in Mealy, we have discussed in Mealy, the present output will be, output will be depend on present state and present input both. Okay. So, and we have also discussed in our session the differences between Mealy machine and Moore machine. So, our today's lecture is all about the Mealy and Moore. Now, this session is powered by digital version 2.0, Jyoti Vidyapeth, Suniversity. Thank you.